Setibanya di lokasi, keduanya, Presiden Prabowo dan Presiden India, Drupadi Murmu, yang hadir dengan wajah penuh kehangatan dan keramahan, saling menyapa satu sama lain. Momen tersebut menciptakan kesan yang mendalam saat kedua pemimpin negara tersebut saling memberi salam dengan penuh rasa hormat. Kedua presiden mengenakan pakaian formal khas kenegaraan, tampak saling memberi senyum yang hangat di antara mereka. Protokol acara yang diatur dengan sangat teliti menciptakan suasana yang penuh rasa persaudaraan di antara kedua negara. Dari sisi kiri dan kanan, pejabat-pejabat tinggi dari kedua negara juga turut ambil bagian dalam momen bersejarah ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Menteri Pertahanan India, serta sejumlah anggota kabinet masing-masing negara berdiri dengan penuh perhatian menyaksikan acara bersejarah ini. Dalam pertemuan tersebut, tampak pula para pemimpin kedua negara saling memperkenalkan rekan-rekan delegasi mereka, yang siap untuk melakukan diskusi lebih lanjut terkait berbagai isu yang menjadi prioritas bersama. Foreign Minister, Culture Minister, Health Minister, Energy and Minerals, Communications and Digital, Secretary to the Cabinet, Chief of Navy. Chairman of our Chamber of Commerce. Chamber of Commerce. मुझे आज राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्न. Pada awal pidatonya, Presiden India menyapa hadirin dengan penuh semangat, menyampaikan salam hangat kepada semua yang hadir, dan menyatakan rasa terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa. Dengan penuh kebanggaan, beliau mengungkapkan kehormatan besar yang dirasakannya bisa menjadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Republik India yang ke-76. Dalam pidatonya, Presiden India juga mengingatkan kembali bahwa pada Hari Republik pertama, Indonesia diwakili oleh Presiden pertama, Soekarno, yang menjadi tamu kehormatan pada saat itu. Indonesia हमारा घनिष्ठ मित्र है. हम समुद्री पड़ोसी. Ini adalah kehormatan besar bagi saya, karena saya mengikuti jejak Presiden Soekarno, ungkapnya dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan. Presiden India mengungkapkan rasa syukurnya atas hubungan yang sudah terjalin lama antara India dan Indonesia, yang dipenuhi dengan ikatan sejarah yang kuat.
Indonesia Beliau के साथ berbicara हमारे mengenai संबंधों को और pentingnya मजबूत melanjutkan बनाने के kemitraan अवसर strategis प्रदान kedua करते हैं। negara वर्ष yang telah 2018 menjadi pondasi में kokoh bagi हम hubungan comprehensive bilateral strategic mereka. partners बने। Kunjungan saya, दोनों meskipun देशों के singkat, बीच saya नियमित anggap sangat राजनीतिक produktif, आदान-प्रदान, kata Presiden समृद्ध India, व्यापार, mengacu pada निवेश pertemuan-pertemuan तथा yang telah मजबूत berlangsung रक्षा एवं dengan para सुरक्षा pemimpin प्रबंध है, India dan जिनमें berbagai sektor industri. आंतरिक सहयोग भी Presiden शामिल India है। juga menyoroti भारत sejumlah और bidang इंडोनेशिया utama yang menjadi fokus इंडो-पैसिफिक kerjasama क्षेत्र kedua का हिस्सा negara, है, antara जो lain दुनिया के kesehatan, सबसे farmasi, गतिशील pendidikan, क्षेत्रों में से budaya, एक है। kapasitas इंडो-पैसिफिक pembangunan, क्षेत्र में serta समुद्री kerjasama di सहयोग पर bidang हमारा pertahanan समान dan दृष्टिकोण keamanan. है। Dalam हमारे दोनों kesempatan देश ini, beliau इस क्षेत्र menekankan में komitmennya शांति, untuk mempercepat स्थिरता hubungan और yang समृद्धि saling के लिए menguntungkan antara प्रतिबद्ध है। Indonesia हम dan प्राचीन India. काल से व्यापारिक Saya ingin भागीदारी भी memastikan रहे bahwa हैं। kerjasama हमारे kami akan आर्थिक semakin संबंध erat dan दोनों देशों membawa के लिए manfaat प्राथमिकता nyata bagi बने kedua हुए हैं। negara. हम Ujar अपने Presiden व्यापार India एवं निवेश disambut संबंधों dengan को tepuk और tangan meriah विस्तारित dari करने hadirin. तथा Beliau juga उनमें berbicara mengenai विविधता sejarah लाने पर panjang yang विचार कर रहे हैं। menghubungkan kedua भारत negara, और इंडोनेशिया terutama के dalam बीच pengaruh स्वास्थ्य budaya सेवा में India भी terhadap Indonesia. सहयोग बढ़ रहा है। Bahasa हम Sanskerta dan खाद्य banyak nama सुरक्षा di के क्षेत्र Indonesia में मिलकर memiliki काम कर akar रहे yang हैं। sangat kuat dari budaya India, डिजिटल lanjut टेक्नोलॉजीज में Presiden हमारा India. सहयोग भी अच्छी Mengenai तरह hubungan से आगे personal बढ़ dengan रहा है। India, हमारे प्रमुख Presiden India शहरों को menceritakan pengalaman जोड़ने वाले pribadinya yang सीधे baru-baru हवाई ini उड़ान menjalani tes चलाए DNA, जाने से yang mengungkapkan bahwa इन dirinya प्रयासों को memiliki और keturunan बल मिला India. है। Saya sangat हमारे bangga दोनों dengan hal देशों को ini, जोड़ने में ujar Presiden India इंडोनेशिया dengan में nada रहने yang वाले hangat. विशाल Beliau bahkan भारतीय menambahkan, समुदाय की महत्वपूर्ण ketika mendengar भूमिका की musik भी India, मैं saya सराहना mulai करना menari. चाहूंगी। ये Mungkin ini भारतीय sudah प्रवासी menjadi bagian भारत dari और diri saya. इंडोनेशिया के बीच एक Melalui जीवंत pidato सेतु ini, का Presiden काम India करते हैं। menyampaikan kekagumannya सांस्कृतिक और terhadap आर्थिक komitmen आदान-प्रदान India सहित dalam अन्य mengatasi क्षेत्रों में kemiskinan उनके dan membantu योगदान masyarakat ने yang हमारी kurang beruntung. साझेदारी को और Saya प्रगाढ़ sangat बनाया है। terinspirasi oleh ग्लोबल साउथ kepemimpinan के Perdana दो Menteri अग्रणी Modi सदस्य होने yang के selalu नाते memperjuangkan भारत kesejahteraan और rakyatnya. इंडोनेशिया कई Tambahnya, बहुपक्षीय सदस्यों sebagai पर penutup, Presiden एकमत India है। mengucapkan doa G20 terbaik में untuk हमारे masa depan घनिष्ठ India, सहयोग के कारण berharap agar हमारे negara दोनों tersebut terus देशों maju ने dalam perdamaian dan 2022 kemakmuran. और Beliau juga 2023 में berharap agar hubungan Indonesia सफलतापूर्वक dan India उत्कृष्टता की। terus हमारी berkembang संयुक्त dan आवाज ने persahabatan yang sudah पिछले terjalin. 7 दशकों से Semoga अंतर्राष्ट्रीय Indonesia dan शांति को India बनाए terus रखने menjadi और sahabat ग्लोबल dan इंस्टीट्यूशंस sahabat dan को mitra yang saling mendukung, मजबूत करने में ujar Presiden प्रभावशाली India di योगदान akhir दिया। pidatonya. महामुहिम मुझे बताया गया है कि आपको भारत के प्रति गहरी रुचि है और आपको भगवत गीता का भी ज्ञान है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतामूलक संबंध को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। महाभारत और रामायण की कहानियां हमें आपसे जोड़ती है। हर साल ओडिशा में बाली यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव भारतीय नाविकों की ऐतिहासिक यात्राओं की याद दिलाता है, जो व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बाली और इंडो पैसिफिक के अन्य भागों की यात्रा पर जाते हैं। भारतीय साझा संस्कृति आध्यात्मिक और कलात्मक संबंध और लोगों के बीच जुड़ाव का यही आधार है। इसे हमारे खान पान और संगीत विरासत में भी देखा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आज के रात्रि भोज के दौरान आप इन परंपराओं की एक झलक देख पाएंगे। महामहिम, मुझे विश्वास है कि भारत की आपकी राज्य की यात्रा हमारे दीर्घकालीन और बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी, जिससे हमारे लोगों को लाभ होगा। मैं गणतंत्र दिवस समारोह में आपकी सहभागिता और इंडोनेशिया बैंड और मार्चिंग टुकड़ी को देखने के लिए उत्सुक हूँ। इन शब्दों के साथ महामहिम देवियों एवं स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम प्रभुवो सुबियांतो के अच्छे स्वास्थ्य, इंडोनेशिया के लोगों की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि तथा भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत संबंधों के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद। On this distinguished event, I would like Presiden once again Prabowo menyampaikan rasa terima to kasih yang extend mendalam kepada Presiden my India, Drupadi highest Murmu, appreciation serta seluruh pemerintah and India my atas sambutan hangat gratitude yang diberikan kepadanya to President dalam kunjungannya yang pertama Drupadi kali ke Murmu India. Saya merasa and terhormat sekali the karena telah entire diundang government of sebagai India tamu kehormatan dalam perayaan for Hari the Republik warm India welcome, yang ke-76, the kata great Presiden Prabowo honor dengan given to tulus. me Dalam pidatonya, during this Presiden Prabowo menegaskan my first kembali state bahwa visit hubungan to antara India. Indonesia dan India telah terjalin sangat lama deepest dan memiliki appreciation nilai historis yang sangat penting. for your government Beliau mengingatkan bahwa pada in perayaan honoring Hari me, Republik India yang pertama, inviting me tamu kehormatan yang as the hadir guest juga of honor berasal dari in Indonesia, the celebration yaitu Presiden pertama Indonesia, India's Soekarno.
Ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya, dan saya merasa seperti mengikuti jejak langkah pendiri Republik Indonesia, tambahnya dengan penuh kebanggaan. Selanjutnya, Presiden Prabowo mengungkapkan betapa pentingnya kunjungannya ini sebagai langkah untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan India. Walaupun kunjungan ini singkat, hanya selama 4 hari, saya merasa sangat produktif. Kami telah mengadakan banyak pertemuan intensif dan mencapai kesepakatan yang substansial, ujar Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga mengungkapkan komitmennya untuk mempercepat implementasi kerjasama antara kedua negara, terutama di bidang-bidang penting seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, keamanan, serta kerjasama maritim dan digital. Kami ingin memperkuat hubungan yang simbiotik, menguntungkan kedua belah pihak, tegas Presiden Prabowo. Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki sejarah panjang yang menghubungkan kedua negara. Beliau juga membagikan pengalamannya yang baru-baru ini melakukan tes DNA, yang mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keturunan India. Ketika mendengar musik India, saya tak bisa menahan diri untuk berdansa. Ini adalah bagian dari diri saya, tambah Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan, yang membuat suasana semakin akrab dan penuh semangat. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya terhadap upaya India dalam mengatasi kemiskinan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Kepemimpinan Perdana Menteri Modi dalam membantu masyarakat yang terpinggirkan dan mengatasi tantangan besar di India sangat menginspirasi saya. Kami di Indonesia juga ingin belajar banyak dari contoh yang baik ini, ujarnya. Sebagai penutup, Presiden Prabowo mendoakan agar India terus maju, sejahtera, dan damai di masa depan. Saya berharap hubungan antara Indonesia dan India akan semakin erat dan kita bisa menjadi mitra yang lebih kuat di masa yang akan datang, kata Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan, diikuti dengan tepuk tangan meriah dari hadirin. Saya ingin mengucapkan selamat dan semoga India semakin makmur, damai, dan besar di tahun-tahun yang akan datang. Semoga hubungan Indonesia dan India tetap menjadi persahabatan yang kuat. Ujar Presiden Prabowo menutup pidatonya. Dengan penuh semangat, pidato Presiden Prabowo berakhir, meninggalkan kesan mendalam tentang hubungan yang lebih erat dan kerjasama yang lebih intens antara kedua negara besar Asia ini. Narasi ini melanjutkan dan menyimpulkan poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, menyoroti rasa terima kasihnya, komitmennya untuk mempererat kerjasama bilateral, serta harapan untuk masa depan hubungan Indonesia dan India yang lebih kuat. And in our daily life, the influence of ancient Indian civilization is very strong. I think it's also part of our genetics. I would like to report to the President, Prime Minister, and Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So, I'm very proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. I come here few days, but I learned a lot. I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership programs and your commitment to alleviate poverty, your commitment to help the marginalized, to help the weakest part of your society is an inspiration for us. And I say, why not follow a good example, especially when you have many good examples. Thank you very much once again. And I would like to wish the people of India prosperity, peace, greatness in the coming years. And I would like to see Indonesia and India continuing to be close partners and close
friends. Thank you very much.